I welcome all the participants, guests, invitees, and members of this task force. This program is organized by the Synthetic and Art Silk Mills Association Limited, that is called task force. Friends, I am the speaker of this session, and today's subject is Principles of Business Ethics, a very important subject. I am by profession Chartered Accountant A. Ram Lakshman Nolakha from Mumbai. I have been invited by the SASPA Limited to speak upon this matter. Not only I will be speaking, but I invite my all participants and friends and the prospective joining the persons of members to participate in our next any programs and this program also, and to share their views and express their views, because ultimately this platform is for SASMA members and general public only. I am just like a coordinator of this session. आइए सबको आने वाले आए हुए हमारे 2024 2024 year has already started and begin. Today is the 1st January 2024. आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आपका व्यापार, आपका बिजनेस, इंडस्ट्री और ट्रेड इसी तरह से फलते फूलते रहे और आप हमारे संपर्क में सदा बने रहे, यही हमारी आशा और हमारा विश्वास है। Friends, SASMA Limited has been organizing several lectures on the subject of the public interest. Maybe it is a trade, commerce, industries, and manufacturers in India or outside India. It may be law, it may be commerce, it may be regulations, new circulars, new provisions, new budgets, and many new schemes of the government time to time. However, SASMA Limited is formed on July 1939 for the basic purpose of promote and protect trade, commerce and industries and manufacturer of India in general, and special reference to silk and man-made fibers and yarns and their products. This is the specified memorandum of association. It is mentioned very clearly the main object of the SASMA. Further object to advance and promote commercial and technical education connected with trade, commerce and industry. आज का सेशन भी हमारा यही मोटो को लेकर चल रहा है, टेक्निकल एजुकेशन, कॉमर्शियल एजुकेशन कनेक्टेड विद द ट्रेड एंड इंडस्ट्री. Further, aim and object to establish just and equitable principles in trade, commerce, industries, and manufacturers. Yes, principles of the business, guidelines for the business, and to form code of practice and rules and regulations to simplify and facilitate transactions of business. Friends, these are the shortened memorandum of association specified SASMA Limited. Aim and object coinciding for the trade and industry, promoting and protecting the members of the industry, especially those who have taken membership of the SASMA. Friends, now the 84 years have been already completed with the SASMA. It had its office at Worli and taking care for number of visitors, guests, professionals, non-professionals, businessmen. It has sponsored the eminent educational and textile research institute that is called SASMIRA and many others too. Friends, now let us come to subject. Today's subject is principles of business. Ethics. क्या होता है ethics? बहुत ही सब्जेक्टिव सब्जेक्ट है. एक व्यक्ति के लिए बिजनेस के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना एथिक हो सकता है, दूसरे के लिए ये एथिक नहीं, कंपल्सरी हो सकता है, और तीसरे के लिए
फॉलो नहीं करना, सिर्फ प्रॉफिट कमाना एथिक्स हो सकता है, लेकिन क्या सही एथिक्स है और क्या गलत एथिक्स है, इट हैज टू बी डिटरमाइंड बाय द सोसाइटी, बाय द कस्टम्स, बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन, by the government laws, by the constitutional rights to every citizen. Business, trade, and industry have to behave looking at the society, looking at the society welfare also, because any business setup anywhere is resourced by the natural sources given by the God. कौन से सोर्सेज है? जल, खूब सारा प्लेंटी में पानी आपको मिलता है, आकाश, हवा, पृथ्वी, अग्नि, many things like that way, पहाड़, नदियां, पेड़ पौधे, वन, संरक्षण, ऑक्सीजन, एनवायरमेंट, जो आपके इंडस्ट्री को प्रोस्पर करने पे, इंडस्ट्री को चलाने वालों को प्रोस्पर करने में, मेंटेन करने में आगे बढ़ती है। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं एथिक्स, बिजनेस एथिक्स के बारे में थोड़ी चर्चा करूं, आपको बताता हूं कि व्हाट द पीपल हैव बीन सेइंग इन द पास्ट, लीडर्स इन द फील्ड, eminent leaders about the business ethics. The first I'm quoting here is Henry Ford. A business that makes nothing but money. A business that makes nothing but money is poor kind of business. Poor kind of business. You all will agree on this? Yes. Money is the sole motto, but not exclusive motto, because it has to work for the society, for the nation, for the country, and for the welfare of everyone. Another ethics business ethics quote है, ethics is knowing difference between what you have a right to do and what is right to do. What you have a right to do and what is right to do. This is also by the eminent leader Porter Stewart. Next, work can run without money and currency, but not without business and trade. Yes, business and trade बरसों से, हजारों सालों से चला आ रहा है। एक बहुत ही इनोवेटिव यंग लीडर ने बहुत अच्छी चीज लिखी है, अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है बिजनेस प्रिंसिपल्स एंड एथिक्स। इट्स नॉट ओनली द अर्निंग ऑफ द मनी, it can be for the welfare of the staff, it can be for the accounting, it can be for the vision and mission, and for so many things. The young leader says, speak fluently. Yes, business principles को define कर रहे हैं. Yes, speak fluently, dress neatly. Speak fluently, dress neatly, and move swiftly. Move swiftly. Yes. आज के जमाने में अगर हम देखें तो बिजनेस का ये प्रिंसिपल और बिजनेस एथिक्स is really going to pay a rich reward. Learn to calculate every step you make, business ethics, and every word you say and every action you take. The primary aim of business is not to earn profit, but serve people, the customers, and the society at large to fulfill their needs. Friends, lots of subjects, lots of things can be said on business principles, ethics principles, ethics के ऊपर हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं. In sum and total, what I feel I will say, जो कंप्लाई करे देश के रूल एंड रेगुलेशन, जो कंप्लाई करे हमारे पंच सोर्स, पंच प्राणों को, पंच एलिमेंट, 5 एलिमेंट्स ऑफ लाइफ, सूर्य, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल, जो कंप्लाई करे सोसाइटी के लिए, जो सोचे सोसाइटी के लिए, और जो सोचे अपने लिए, सबके लिए, हम सबके लिए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। सबके भाग के, सबके लिए सोचने वाला, बिजनेस में अपने प्रिंसिपल से करने वाला आगे जाके प्रॉस्पर होता है। फ्रेंड्स, देखते हैं
कुछ रिटर्न मटेरियल्स मेरे पास हैं जहाँ से एथिक्स को डिफाइन किया गया है. बिजनेस तो कॉमन सेंस कॉमन पार्लेंस में आप कैन से इट इज मेड फॉर प्रॉफिट एंड फॉर वेलफेयर एंड फॉर अदर एक्टिविटीज. वाणिज्य हो सकता है, व्यापार हो सकता है, इंडस्ट्री हो सकती है, यूनिट हो सकता है, मैन्युफैक्चरर हो सकता है, ट्रेडर इन सर्विस प्रोवाइडर, वॉट एवर. Ethics is derived from the ancient Greek ethos, meaning character is the essence of values and habit of a person or a group. It has many definitions. According to one, ethics are the principles of conduct governing an individual or a group. Governing an individual or a group. Another describes as ethics. Ethics as relating to what is good or bad and having to do with moral duty and obligation. फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा कि दुनिया पूरी एथिक्स और वैल्यूज एंड मॉरल्स पर टिकी हुई है. भरोसा, विश्वास, हमारे वैदिक साइंस के लिटरेचर वैल्यूज एंड एथिक्स की हमें गाइडेंस देते हैं. बिजनेस एथिक्स की गाइडेंस हमारी सरकार, हमारे खुद के सेल्फ कॉन्शियस, हमारे रूल्स, हमारे डिसिप्लिन, हमारे एसोसिएशन, हमारे लीडर्स, हमारे एग्जाम्पलरी एंड सक्सेसफुल पर्सनालिटीज, they give and they make us to go for business principles on ethics. आपने काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन में देखा होगा मिशन एंड विजन के बड़े स्टेटमेंट लगे होते हैं, बड़े कोट्स होते हैं. That is just like a reflection of ethics of that particular business process and trade or industry. Now we are speaking about business ethics. मैंने कहा एथिक्स है तो मोरल है, मोरल है तो वैल्यूज है, और वैल्यूज है तो सर्वाइवल है. शुड ए बिजनेस एंटिटी बी एथिकल? आप में से बहुत से लोग ये सवाल कर सकते हैं, क्या क्या जरूरी है एथिकल होना? क्या जरूरी है डिसिप्लिन को, अनुशासन को, कंप्लायंसेस को, रेगुलेशन को, सेल्फ ड्यूटीज को, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो करना और बिजनेस करना? Many of you may say not necessary, many of you may say yes. उनको तो फॉलो करना ही है और उसके साथ अपने बिजनेस प्रिंसिपल्स के एथिक्स को भी फॉलो करना है, बिजनेस को भी फॉलो करना है. It is a well, it is now a well accepted fact that ethical behavior creates a positive reputation that that expands the opportunities for profit. आजकल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपने देखा होगा, एक जस्ट एग्जाम्पल के लिए भाषा का नाम तो काफी आपने सुना है, टाटा का भी नाम आपने सुना है. मैं बाटा का एग्जाम्पल देता हूँ. आई थिंक मोर देन 60 years ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन, और जिस स्टैंडिंग और जिस वैल्यूज के साथ वो अपना प्रोडक्ट बनाते हैं वो सस्टेनेबल भी होता है, चलता भी है, और मन को, शरीर को, अपने आप को प्रसन्नता भी देता है. तो प्रोडक्ट में कभी उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया, ऐसा मैं सोचता हूँ. दिस इज द एथिकल प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस. दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ दिस. अपना प्रॉफिट मोटिव भी रखा है और कंज्यूमर का भी ध्यान रखा है और रखते आए. फ्रेंड्स, an organization is not only in its building, assets, capital, or even profit. It is living and creative, evolving over time and having a vision about its future role in society, future role in society, nation, and the world. So covered everything. आप बिजनेस की ऊपर में बैठकर कर रहे हैं, लेकिन आपकी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी देश के प्रति, सोसाइटी के प्रति, विश्व के प्रति भी आपको किस एक्सटेंट तक आप एप्लीकेबल हो सकते हैं, आपको सोचना है अपने बिजनेस प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स. I think in the broad sense, ethics in business is simply the application of everyday moral or ethical norms to business.
ethics of importance. Being ethical in business requires acting with an awareness of how the product and services of an organization and the actions of its employees can affect its stakeholders and society as a whole, and developing code of conduct for doing business in an ethical manner. बार बार हम कह रहे हैं अपना प्रॉफिट तो आप कमाइए, साथ में अपनी जिम्मेदारियों को देश के प्रति, विश्व के प्रति, इस कल्चर के प्रति, ब्रह्मांड के प्रति, अपने प्रति भी कुछ कुछ जिम्मेदारी का रोल एथिकली अपने बिजनेस प्रिंसिपल्स में शामिल करें. While values and moral development are part of personal development, organizational factors can also affect ethical. एक अच्छा leader in the organization can lead many followers, make many followers, lead many leaders, and make with his ethical behavior organization multiply manifold. So personal character of the leaders of the organization also affects productivity of the business forever. Strength of the organization culture influences ethical behavior. So friends, why there is a need for business ethics? Why there is a need for business ethics? Trusteeship provides a means of transforming the present capitalist order of the society into an egalitarian one. Mahatma Gandhi, according to him, once said, a businessman has to act only as a trustee of the society for whatsoever he has gained from the society. Everything finally belongs to the society. Society bestows upon businesses the authority to own and use land and natural resources. In return, society has right to expect that productive organizations will enhance the general interest of the consumer, employees, and the community. Society may also expect that organizations to honor existing rights and limits their activities within the bounds of justice. So, what are minimal duties of business or a profit? Business ethics provides the guidance, including the consequences and complications of their actions. Thus, business ethics is a set of principles or the reasons which should govern the conduct of business, whether at the individual or collective level by the application of ethical reasoning to specific business situations and activities. So, awareness about ethical compliance, ethical following business principles also is a part of principles of business ethics. Need for complying with the rules, regulations, and legislation, law of the land, customs, and the expectation of the community, the principles of morality, policies of the organization, and such general concerns as the need of others and fairness. So, business ethical requirements that you are aware of all this. How the product and services of an organization and the actions of its members can affect its employees, the community, and society as a whole. As a whole, friends, latest legislation uh, that you might have heard, CSR, corporate social responsibility. So all the corporates, eligible corporates, yes, liable corporates are eligible and bound to provide some part of profit for corporate social responsibility in line with government legislation to fulfill their social obligations in return of earning from this land and this command.
So this is one of the example of principles as laid down by the government and as being followed by the various institutions as a corporate social responsible personality. It not only applies to the corporate, but everyone who is doing business. It has been there also in the early part of the भारत की संस्कृति में हमेशा सोशल जिम्मेदारी को सबसे पहले बिजनेसमैन ने निभाया है तो निभाते आए हमारे एंशियंट कल्चर श्रीमद भगवत गीता सब कुछ भी यही बोलते हैं कि पहले हमारा भोजन का कवा और समर्पण होना चाहिए उसके बाद हमें प्राप्त होना चाहिए यानी कि देने की भावना सबका साथ सबका विकास आज का संदेश हमारा नियम प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। तो भाई और बहनों we can define business ethics as the principles and standards determine acceptable conduct in business organization. Why need? Because to survive in the current scenario, you are fulfilling your business principles as ethical behavior. You are liable to and you are eligible to get the fruits of your business. You may differ, and anybody can differ with my opinion, but my experience as a professional has been that I am just giving an example. I am associated with the National NGO Bharat Vikas Parishad, and I did intentionally seva and sanskar activities, model orientation activities, and guidance, the designation of allocation of work to me for the last 7, 8 years. I have been watched by the many of the dignitaries in the organization. After 5 to 7 years later, after working and having my role as a socially, in addition to professional role for the community, I was doing that. Like National Group Song Competition, भारत को जानो competition, गुरु वंदन छात्र अभिनंदन ऐसे प्रोग्राम्स को करने में जहां मेरा रोल था वो मेरी एथिकल मेरा मोरल मेरा प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस था कि मैं अपने प्रोफेशन के साथ जिन लोगों के साथ उठता हूँ बैठता हूँ सोता हूँ चलता हूँ फिरता हूँ जिनसे लेता हूँ जिनसे देता हूँ उनके लिए भी हम कुछ करें कोविड के टाइम हो या अदरवाइज अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स में एथिकल बिहेवियर में मॉरल और ड्यूटी समझते हुए फुलफिल करें फ्रेंड्स lastly, to conclude this session, what are the benefits of these principles of ethics? In short, improve society. अगर आप जहाँ बिजनेस करते हैं उनसे दूर दूर के एरिया तक अगर आप अपना रोल अच्छे ढंग से निभाते हैं तो नेचुरली सोसाइटी विल बी वेरी गुड फॉर यू एंड फॉर एवरीवन easier change in management yes अच्छे ethically behaved organization के principles में फटाफट कोई भी वैल्यूशन लेकर आगे बढ़ता है strong teamwork and greater productivity many examples you can see enhance employee growth ethics program help guarantee that personal policies are legal ethics program help to avoid criminal act of omission thus friends principles of business ethics principles of some are governed by government some are governed by country some are by Brahman some are by your community some are by your self-conscious and by your organization team and effort सबसे पहले अपनी principles को ethically साउंड करके डिजाइन करिए फ्रेम करिए इस तरह से हमारे देश का संविधान के लिए एक प्लेज बनाई गई है आप पढ़ेंगे वो प्लेज तो आपको लगेगा कि वो वी आर गोइंग टू बिकम एथिकल सिटीजन वी हैव गाइडेड बाय दिस
मैसेज ऑफ द डे है। अपने ऑर्गेनाइजेशन और अपने बिजनेस में मिशन और विजन स्टेटमेंट और अलग अलग लेवल पर प्रिंसिपल गाइडेंस मॉनिटरिंग कंप्लाई करते हुए वेरियस लॉज एंड रेगुलेशन को फ्रेम करें। अपने टीम और अपने स्टाफ को, अपने मैनेजमेंट को ये सोचकर चलना है कि बिजनेस के साथ हमारी कुछ अलग ड्यूटी है। स्वस्थ, समर्थ और संस्कारित भारत, स्वस्थ, समर्थ और संस्कारित भारत, फिजिकली, इकोनॉमिकली एंड मॉरली स्ट्रॉन्ग इंडिया, फॉलो द राइट बिजनेस प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स, बिहेवियर। और इसी के साथ ये खासमा लिमिटेड के द्वारा प्रेजेंटेड आज का सेशन, आई इनवाइट any of you listening my session to be as a guest speaker, and we invite for a not only a guest speaker but an analysis and many for other advices. You can be part of this program. We will invite you. We will record and spread the knowledge. You may have the research. You may have the many talented, successful stories. You may have the trade and business achievements in textile or otherwise. This can be the lesson for others. So, Tasma, once again, thanks everyone. 2024 year 2024. Let's be rocking again 2024, 2024, 2024, friends. Thanks, thanks once again. Thanks, thank you very much. ये राम लक्ष्मण नोला का वेलकम, वेलकम। आप इसका प्रीमियर शो देख सकते हैं यूट्यूब चैनल सी ए कैपिटल लेटर्स में राम लक्ष्मण नोलखा, सी ए राम लक्ष्मण नोलखा। वंदे मातरम। भारत माता की